Hello guys, so we are going to Tarabu Waterfalls today, and it is situated in the Malkangiri district. It is near like Chitrakonda, so around like 170 kilometers from Jaipur. So we have left around like 8 o'clock from Jaipur, and we'll be mostly reaching there by 12:30. So you also need to trek like 2 kilometers because there is no proper road there. So guys, this is Govindpally Junction, and if you take left, we go to Palimela and Chitrakonda, and if you take if you go straight, you go to Malkangiri. So since we want to go to Tarabu Waterfalls, this road would be the shortest one. So you need to take left from this Govindpally Junction. Yes. So Govindpally Junction is like 1 kilometer from the Govindpally bus stand. Yes, this is the place that we need to go. Guys, as you can see, Chitrakonda is around 76 kilometers from here. So guys, this is the place Janbai. If you have seen Daman, you can totally relate to this place, although now it is developed one. So guys, you can park your vehicles here, and then we have to start the trekking. So there's a small correction guys, it's not 2 kilometers because since there is no rain, yeah, you can do off-road and you can like cover around like 1 kilometer, and also you can cover this road if you are coming in a two-wheeler, but it's very tricky for a four-wheeler basically. So yeah, you need to walk around like 1 kilometer from here max, but yeah, so कौन अंशुमान जीवो कि नहीं? Huh? Yes, the vehicles are going from this way to that way. From this way to that way. How going? So guys, we need to cross this. अब गाड़ी तो नहीं जाने वाला है, तो ये हो गया पार्किंग स्पॉट हमारा गाड़ी का, और मिनी लद्दाख की तरह फीलिंग आ रहा है। और ऑब्वियसली बाइक होता तो गजब का ऑफ रोडिंग एक्सपीरियंस होता आज। अने केते दूर हबो आउ? आगोटा पाखापाखि 5 किलोमीटर कि 6 किलोमीटर। रास्ता केमदी अछि? रास्ता अछि मतलब लेवल अछि, टिक गात अछि, टिके अप एंड डाउन अछि। हां लेवल अछि सेमती अछि तो, बट लोकल्स बोल रहे हैं कि यहां से करीब और 4-5 किलोमीटर है, तो हम क्या करते हैं अभी देखना पड़ेगा। और यहाँ बहुत ही मुश्किल से गाड़ी निकलते हुए
जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी हैवी ड्राइवर्स की यहाँ ज़रूरत है वरना ये रोड बहुत ही मुश्किल है। प्रॉपर रोड्स नहीं है, गांव वाले जो यूज़ करते हैं वही है बेसिकली। एंड वहाँ से मतलब आपको मिनी लद्दाख का फीलिंग आ रहा होगा, हर जगह पानी है, आपको क्रॉस करके जाना है। कौन तो ना कौन नी पेरू इटी सो गाइस ये जो प्लेस है वो आंध्रा उड़ीसा बॉर्डर में है एंड अभी जो हम लोग करंट विलेज में हैं वो आंध्रा है। सो गाइस फाइनली अभी हम पहुंच गए हैं ऑलमोस्ट नियर इज द वाटरफॉल। तो अभी हम लोग गाड़ी पार्किंग कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग है, करीब 15 बार हमको गाड़ी से उतरना पड़ा एंड गाड़ी जा रहा है बट बोलेरो है इसीलिए इसके कैपेसिटी के हिसाब से अच्छे से जा रहा है। नहीं तो 2 व्हीलर ही अच्छा है, 2 व्हीलर प्रेफर कीजिए आप लोग। और हम सोचते थे कि यहाँ पे कोई नहीं आएगा बट बहुत सी गाड़ियाँ हैं, करीब 50 गाड़ियाँ हैं अभी के लिए इस जगह पे। एंड यहाँ पे पार्किंग का भी प्रॉब्लम है बिकॉज इस साइड में पूरा खाई है, तो सिर्फ वन वे ही है। अंशुमन कैसा है सफ़र, कैसा लग रहा है? सफ़र तो बहुत मुश्किल है भाई, बट स्टिल एंजॉयमेंट के लिए, एडवेंचर के लिए इतना दूर आना पड़ता है। वो तो सही बात है। 20 जन आ रहे हैं। कैसा है? बहुत दिन के बाद आया था मैं और बहुत ही खतरनाक सफर था। लद्दाख का फीलिंग आ गया। अभी आप देख सकते हैं कि ये लोग गाड़ी पार्क कर लिए इधर और अभी हम लोग जा रहे हैं वो वाटरफॉल के पास देखने के लिए। खाना भी पैक हो गया है और सब जो ज़रूरत चीज़ वो सब पैक कर दिए हैं। अभी हेडिंग टुवर्ड्स द वाटरफॉल। अच्छा, so guys, welcome to गुंजीवाड़ा waterfalls. Finally we have reached the Tarabu Waterfall and this place is also called as Gunjiwada Waterfalls by the local. The trekking has been like immense guys, like we have done off-roading and then we have to walk like around 0.5 kilometer, but the view is worth it, right? You can see guys, all this struggle is worth now. Amazing view guys, like I haven't seen a better waterfall than this one. Amazing man, amazing. So guys, I hope you have liked our video and do subscribe for more such amazing vlogs guys. Thank you, stay tuned.